and like we've spoken to now, the purpose and the idea behind coming into these small breakout rooms in these intimate gatherings has been that that for the past 2 years it has been a difficult journey for all of us. We've all gone through COVID times and personally witnessed in our own lives as well as in the lives of those around us lots of upheaval that has happened. But the resilience and the courage of so many amazing people, organizations, individuals, youth leaders has what has gotten us across. And we really wanted to create a space where we could come together and celebrate that. तो जो पिछले 2 साल हमारे लिए बहुत ही कठिन रहे हैं कोविड की वजह से, जहाँ पे खुद की निजी जिंदगियों में और साथ ही में आसपास में जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, जो आसपास में दोस्त हैं, हमारे आस पड़ोसी हैं, सबकी जिंदगियों में काफी तहस नहस मची है और हमारे लिए सबके लिए कठिन सफर रहा है। पर इसके दौरान जो हमने युवा नेतृत्वता का एक तरीके से एक मूवमेंट, एक वेव देखा है, महसूस किया है, जहाँ पे इतने सारे संगठनों ने जो काम किया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणात्मक रहा है। एंड हम लोग चाहते थे कि हम साथ आके थोड़ा सा इन कहानियों को और गहराई से सुन पाए और सेलिब्रेट कर पाए। So to start us off in this space, I'm going to invite actually Naghma, जो Edelgive की CEO है. Thank you so much, Naghma, for joining us, and just to introduce you to the folks that are here. हालांकि नगमा जी का रिश्ता शुरुआत में काफी नंबरों और Hi Neha, you are muted. Can you please unmute? Sorry, 2 devices, hence the. Can you? Yeah. So like I was saying, Naghma actually started as a chartered accountant, but she has a very powerful personal journey of how she decided to switch her career course and entered the space of philanthropy and the development sector. She has been doing some amazing work, and जो पिछले 2 साल में जो भी लोग डेवलपमेंट सेक्टर के साथ जुड़े होंगे, उन्होंने बहुत सारी कहानियां देखी होगी, जो रिपोर्ट्स हैं, जो उन्होंने मदद किया है एक पूरे कलेक्टिव को फॉर्म करने में फॉर माइग्रेंट वर्कर्स एंड क्रिएटिंग फंडिंग. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन रीसेंट टाइम्स Naghma spearheaded a movement to ensure that there is support for the middle-sized and जो छोटे और middle-sized संस्थाएं हैं as part of the Grow Fund. So she spearheaded the idea of how there is support needed for organizations to survive during these difficult times, and really brought together a group of 100 organizations across the country who are going to undergo this journey of organizational development and capacity building. ऐसी चीजें जिस पे खास करके फंडर्स ज्यादा फंडिंग नहीं करते हैं, but which is very essential for sustainability and the resilience that we talked about. So Naghma, really opening up the space to you, if you could share some reflections and just thoughts on how during the COVID times, how you've seen interdependence happen, the resilience that you've seen happen, and opening the platform for you. Thank you. Thank you so much. Thank you for inviting me here, and thank you so much to each and everyone who is in this breakout room and in this entire VartaLeap process. It's great to be here. I will not take up too much of this time because I think it's more important to hear from you. But yes, I have been called specifically to speak about cooperation, collaboration, movement. But really the power of, there is nobody who can cooperate, collaborate, and move together as much as youth can. And I have a theory now, which is very experiential, in why the youth is more capable of it than everyone who's jaded and experienced and learned and knowledgeable. But to start with, what Neha said is my personal journey. My journey from being a chartered accountant to being someone who was just a very curious member of the development sector. और उसके बाद में वहाँ से to every year एक
1 साल 2 साल ऑब्जर्वर रहना, देखना कि हो क्या रहा है, to be able to just absorb from what is and to be able to now be a very proud curator and participant of Edelgive and the Grow Fund. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी हुई है और मैं उसमें से हर पहलू के बारे में बात नहीं करूंगी, बट कुछ चीजें हैं जो मुझे एक बाय एक समझ में आने लगी एंड टुडे आई फील दैट काश के अगर मुझे 10 साल पहले पता होता तो मेरा जर्नी थोड़ा शॉर्ट हो जाता, बट आई थिंक सम थिंग्स हैव टू हैपन बिकॉज वो एक्सपीरियंस के बगैर कुछ हो नहीं सकता. सो कल ही कोई मुझसे पूछ रहे थे कि कोलैबोरेशन मूवमेंट ये आपको बहुत आसानी से आता है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोलैबोरेशन मूवमेंट किसी को आसानी से कभी मिल ही नहीं सकता. ओके, आप कलेक्ट हो सकते हो, आप कलेक्टिवाइज हो सकते हो, आप मिल के सोच सकते हो, बट अगर कोलैबोरेटिव मूवमेंट किसी ने करना है तो वो बगैर क्यूरेटेड कॉन्सेंट्रेटेड प्लान्ड एफर्ट के हो ही नहीं सकता. ये मेरा पर्सनल मानना है. जब हम सोचते हैं फॉर एग्जांपल गांधी जी ने दांडी मार्च किया, क्या हमें ये लगता है कि एक दिन वो बस उठ गए और चल पड़े और पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा? That is a very great impression that we have, but are we really thinking that Gandhiji had no plan, that there were no workers, party workers, that there was no social workers who were saying अच्छा इसको movement कैसे बनाया जाए, इसके मुद्दे को कैसे दिमागों में सील किया जाए, हर इंसान को सड़क पे कैसे लाया जाए? क्या इसके बारे में कभी किसी ने बातचीत नहीं होगी? क्या ऐसे हुआ कि गांधी जी ने सोचा कि मैं चलूंगा और देश चल पड़ेगा? That is not how powerful movements happen. Powerful movements start from a thought, may start from an individual, but they have to be designed, curated, और उसके लिए लगता है बोरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. किसको बताया जाएगा, कौन बताएगा, क्या मैसेज होगा, 4 वर्ड्स होंगे कि 10 वर्ड्स होंगे, ओके, सुबह 4 बजे निकलना है कि शाम के 10 बजे निकलना है, ये सब बात भी होगी ना. तो हमको जो ये रोमांस है ना कलेक्टिवाइजिंग से मूवमेंट तक, उसके पीछे की जो मेहनत है वो अभी एक एक करके आपको समझ में आती है. इसीलिए जब यूथ कलेक्टिवाइज होता है तो एक्साइटेड होता है, जब तक वो हमारी एज का हो जाता है तब उसके पीछे की मेहनत आती है और वो जेडेड हो जाता है. इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप सोचें कि नहीं हमें कलेक्ट होना है, मूवमेंट बनाना है, तो उसके पीछे मेहनत की अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है और उसके पीछे वो बोरियत एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की भी बहुत जरूरी है. तो डिजाइन इज एवरीथिंग इफ यू वांट टू मूव एनीथिंग, ये मेरा मानना है. दूसरी बात ये है कि हम कुछ पढ़ लिख के बड़े होते हैं. हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमको 15 साल 20 साल तक सिखाया है कि बगैर पूछे बात नहीं करना, आउट ऑफ टर्न बोलना नहीं, सवाल का जवाब देना, और गलत जवाब दोगे तो मार्क्स कटेंगे. उस सिस्टम से निकल के अगर कुछ नया बनाना है, मिलके काम करना है, तो उसके लिए अनलर्निंग लगती है कि अपने आप को छोटा करना पड़ता है ताकि दूसरों की आवाजें अपनी कानों में आए. और ये प्रोसेस कितना भी हमको अगेन अच्छा लगे, रोमांटिक लगे, स्मार्ट लगे, उसके दौरान गुजरने का जो तकलीफ है वो बहुत जरूरी है. when you think you are 100% right, but you have to keep quiet to hear the other voice. That is an important part of any collective that happens. I'm not trying to make it larger than life. I hope this is actually sounding more tangible. That's the truth about even अगर शादी भी करनी है किसी से तो ये तो उसका रूल बनता है ना. Yeah, so what I was basically saying is that any work that happens beyond oneself, whether it is a marriage or whether it is a movement, the knowledge of when to keep one's own counsel, कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब सुनना है, कब सुनाना है, कब देना है, कब लेना है, इसका कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है. और कभी कभी गलत नहीं होके भी चुप रहना जरूरी होता है. और ये एक्सपीरियंस आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत तगड़े तरीके से पहले साल में ही सिखा देता है. जब जब प्रोटोकॉल हायरार्की की वजह से कभी चुप बैठना पड़ता है. I looked at it very differently. I looked at it as a learning. And if I would have looked at it as being defeated, कोई मेरी सुनता नहीं, it would have been end game. I think to take that opportunity and say हाँ आज चुप रहना है क्योंकि आज चुप रहने का दिन है, कल बोलेंगे क्योंकि कल बोलने का दिन होगा.
So that becomes a very, very important thing, especially in the concept of grow and in the concept of curating collaboratives जिस तरीके के एडलगिव बनाता है, उसमें हमने एक प्रिंसिपल बहुत फॉलो किया है. एक ये है कि हमारा मिशन क्या है. हमारा मिशन ये है एडलगिव का कि ग्रास रूट्स में स्मॉल एंड मिड साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस में फिलैंथ्रोपिक कैपिटल पहुंचे, उनकी डिग्निटी के साथ, उनके काम के हिसाब से. और हम जो है, हम बीच में बैठे हैं, फंडर और ग्रास रूट्स के. हमारे पास वो लैंग्वेज है, हम किस तरह से फिलैंथ्रोपिक कैपिटल को स्मार्टली इकट्ठा कर पाए, उसको मोबिलाइज कर पाए, और किस तरह से मिशन के बारे में ज्यादा बात कर पाए. ये हमारा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है. इस ऑब्जेक्टिव को हमने कभी डाइल्यूट होने ही नहीं दिया, इसलिए हर 2 साल में हमारा कोई ना कोई कोलैबोरेटिव आता है. लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को अगर बढ़ाना है तो हमारे पास 2 काम है. एक तो मिशन जो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, बट दूसरा है द बिजनेस ऑफ रनिंग द मिशन, okay, which has to be agile, which has to be sterile, which has to be only commonsensical. Standard operating procedures, high, analysis, data capturing, back-end processes, hiring process, evaluations, donor reporting. All of this is the business of managing the mission. Okay, we cannot get emotional about the business of managing the mission. फंडर ने सवाल पूछा, हम दुखी हो गए. ओके, ग्रो चलाने के लिए मेरे पास अभी 40 फंडर्स हैं. ओके, एंड 40 funders are not all, they are all brilliant people, but they are not giving me or giving Edelgive funds because they like us. Okay, there is an active credibility management, there is a transparency, there is a accountability there. So the third point that I'm saying is that mission dilute hona hi nahi chahiye, but the business of running the mission has to be agile, has to be adaptable, and has to be truly accountable if you understand to the test of time. And the fourth and the last piece that I will say is, बहुत बार ऐसे होता है कि हमको करना है और हमारे सपने होते हैं कि हम बहुत सारे लोगों के साथ काम करें, लेकिन हमें लगता है नहीं, हमारे 4 दोस्त हैं, हम साथ में इकट्ठा होंगे और इन्हें शुरू करेंगे, और एक ना एक दिन ये मिशन बड़ा हो जाएगा. एंड दैट इज ब्रिलियंट टू बिगिन विद, बट जब हम बैठते हैं ना टू मेक द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग द मिशन, वी कैन नॉट थिंक एज 4 फ्रेंड्स. वी हैव टू थिंक of Maharashtra, of India, of Nandurbar, of the biggest scale that we want to operate in. It's okay not to operate at scale, but अगर आपको सच में लगता है कि देश बदलना है, आपको सच में लगता है कि मैं लखनऊ बदल दूंगा या मैं महाराष्ट्र बदल दूंगा, तो सोच महाराष्ट्र से शुरू करो. सोच बाइकला से मत शुरू करो, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन में वो सपना पूरा होना चाहिए, तो आपके काम उस सपने के लिए होंगे. अगर 4 दोस्तों तक के डिजाइन में अगर आपने बनाया, every escalation will be like creating a new idea. The pain will be every time you want to jump one hierarchy up. That again is one tip that I'm giving here, because too many great ideas are designed for micro ecosystems, and with the dream that one day it will scale. Unfortunately, I don't know any model that has been able to work like that. Even if it started small, the founder had the big idea in his head, and that big idea we should never leave. So that's it. इससे ज़्यादा ज्ञान मेरे पास नहीं है. Everything that we have done sits on these 4 pillars really. There's nothing else. And I'm just going to leave you with one quote from Bruce Lee, who is one of my, I really admire the lessons he's left behind. And I say this because what I'm going to quote now, जो मैं बताने वाली हूँ, that is actually the fundamental principle of anyone who wants to create collaborative. Creators of anything have to become the smallest personality in that room, because you want everyone to come together and do what you want them to do. आपकी आवाज सबसे हल्की होनी पड़ेगी ताकि दूसरों की आवाज आए. And he's left a thought here. He said, empty your mind. Be formless, shapeless like water. If you put water in a cup, it becomes the cup. You put water in a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Okay? And
water is the most powerful element, and water can do anything because water can take any shape. So जिस भी को collaborate करना है, I think to stay formless, to stay agile, and to keep receiving, not be weak, is the key to all collaborators. Thank you very much, and good luck to every single one of you, and looking forward to your stories. Thank you. Thank you so much, Naghma, and very beautifully articulated, I think. And also in that sense, touching upon, I think, the stories that we have in this room of the 4 amazing groups that have shown so much resilience, you know, the hard work, the desire to work as collaborators, and what you talked about to your last quote, the ability to be agile, to be adaptable, and therefore resilient. I think ये जो हमारे चारों groups जो हैं, वो they display this in spades. So deeply grateful, Naghma, and thank you for sharing this. And so without further ado, I'm going to get into यहाँ पे Naghma ने context set कर दिया है, तो उसके बाद कहानियों में थोड़ा सा उतरते हैं, and I'm going to just invite one by one different people and invite you to share your story of resilience during the COVID times. So let's just start with Tamanna, who is representing Mind Piper, which is a fantastic organization working on mental health. And Tamanna herself is an ardent mental health advocate. And she's a counseling psychologist and has done a lot of work. I've had the privilege of seeing her in action in one of the big government trainings that she was doing for well-being during this time. So Tamanna, over to you to share your story. Thank you so much, Neha. Well, I think firstly, just also want to say, I think I can't see her, but Naghma, thank you for sharing what you did. I think you really not only set the context, but the quote by Bruce Lee was just wonderful to, like you said, water, I think, to just flow into the stories that are to come. I think so. Without further ado, and Neha, please feel free to stop me if you want me to speak. I might be speaking both in English and Hindi. So कहीं अगर आपको लगे तो please feel free to just stop me there. So I think जैसे कि आपने नेहा से भी सुना, मेरा नाम तमन्ना है. मैं एक Is this better, Anita? Yeah, that's better. That's better. Okay. So I'll be a little bit louder. जैसे आपने नेहा से सुना, मेरा नाम तमन्ना है. मैं एक मनोवैज्ञानिक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, और कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत, चर्चा बहुत ज़्यादा हो गई थी कोविड-19 के दौरान. और ये मेरे और हमारी कम्युनिटी के लिए भी बहुत ही खुशी की बात है, बिकॉज आई थिंक इट वाज हाई टाइम कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोग बात करें. जब अप्रैल का महीना आया था, आई थिंक वी आर ऑल वेरी फेमिलियर विद अप्रैल, क्योंकि तभी सेकेंड वेव, कोविड का सेकेंड वेव आया था, एंड इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल. इट वाज अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ grief, a lot of loss is what we were hearing. So at that point of time, Mind Piper started an initiative along with the government of Delhi to provide psychosocial support to COVID impacted and recovering patients within Delhi NCR. और इस दौरान में हमारे पास 100 से ज़्यादा काउंसलर्स थे जो कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर रहे थे कोविड-19 पेशेंट्स को जो रिकवर हैं या दौरान में शायद दे आर फेसिंग कोविड-19. एंड जब हम पहली बार आए, बहुत ही जब हमने बताया कि हम ये कर रहे हैं और काउंसलर से बातचीत की एक ग्रुप में, बहुत हाईली मोटिवेटेड थे काउंसलर्स. दे वर सो हाईली मोटिवेटेड, इट वाज इन्फेक्शियस. हमें भी सुनने में कितना अच्छा लग रहा था, इतनी दिलचस्पी आ रही थी. हम सब एज अ ह्यूज कम्युनिटी वी वर लाइक वी आर रियली कुछ ना कुछ करेंगे आगे जाके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मानसिक स्वास्थ्य के नाम पे एक्सेट्रा. बट सडनली एक महीने के बाद वो मोटिवेशन लेवल ड्रॉप्ड अ लिटिल बिट. तो हमने सोचा कि ये इतने हाई पर व्हेन दे स्टार्टेड, और काम तो था बिकॉज देयर वर लॉट्स ऑफ अनफॉर्चुनेटली स्टोरीज दैट वर कमिंग आउट. तो एकदम से इनकी मोटिवेशन डिप कैसे हो गई. एंड
कहीं ना कहीं हमारे टीम ने सोचा कि अब इसको थोड़ा सा जांचते हैं, देखते हैं कि क्या होगा, क्यों ये चीजें हुई। तो मेरी भी बहुत सारी काउंसलर से बातचीत हुई, सुपरवाइजर से बातचीत हुई, पर एक काउंसलर से जो बात हुई, आई थिंक वो मेरे साथ बहुत रही। When I spoke to this counselor, she said कि दिन पर दिन, एक महीने, I'm listening to narratives of death, grief, loss. फोन उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि मेरे रिलेटिव्स को ये हो गया, फ्रेंड्स को ये हो गया, नेबरहुड में ये हो गया, मैं अपने फादर को नहीं देख पाया, मदर को नहीं देख पाया, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली हियरिंग दिस, what to do with life, feeling hopeless, will this ever be okay? And she said ki after a point of time, this has started impacting me because I'm hearing this day in and day out. And every single time I hear this, I start feeling, because she herself had seen in her neighborhood, her relatives, COVID, and how they'd fallen in. She said it starts bringing up a lot for me, and it becomes difficult for me to engage with this. बिकॉज शायद हम कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे हम सभी ह्यूमन हैं। कोविड-19 मुझे भी इम्पैक्ट हुआ है, तो ये होप जो उनको चाहिए है वो मैं अपने में कहाँ से लेकर आऊं। एंड आई थिंक दैट रियली हिट मी बिकॉज as I said, it had impacted us, it had impacted me as well. So I was feeling very helpless कि किस प्रकार से क्या कह सकते हैं, कि grief इतना all consuming है initially, that how do we move forward, or whether we need to move forward. And I think when I was surrounded by this, I did what I could in my capacity, and I just asked her, I'm here with you, what can I do to help? And I think जब हम सभी वापस टीम में गए, सबने ये सारी चीजें जब सुनी, तब हमें लगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सब as a team of counselors, जो 100+ counselors थे, to come together on a virtual forum and look at what is the work that we are doing and focus on our humanness. And I think when we came together, all 100 of us, 120 of us, and we just spoke about us, our story, किस प्रकार से हमें impact हुआ है, क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में, that feeling has stayed with me so much. Because I think, जैसे कहते हैं ना, that community, that power of that community just stays with you. Because sometimes it's not just about the happy moments and the ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, but also about how through struggles and challenges we can move forward together as a community. And I think that is something that has stayed with me quite a bit. Thank you. Thanks so much, Tamanna. And I think the species as a whole that we are as human beings, we tend to forget the pain, which allows us to move forward. And at the same time, for some of us, the processing of the pain has not completely happened because we didn't have access to it. And I think what you just brought into focus was also that we're celebrating so many people for being resilient, for being, in that sense, working in the forefront. But somewhere it is critical to go back and sort of engage, because it's not as if everything is all right and we're all in it together and we're all going through it together. So it's not as if it only happened to one. So thank you for all that you did and are doing, and for bringing that into focus. I would just invite all the audience to just engage. Agar aap apne videos on kar sakte hain, that would be fantastic. I think it just helps for all of us to see. If you're not able to turn on your videos, it would be fantastic agar aap chat mein ya through reactions, if you can just sort of connect back with the speakers, because I think jab hum apni kahaniyan share kar rahe hain, it helps to know that actually there are people out here who are listening and connecting and engaging. So thank you. Thanks, Tamanna. And really moving from there, from Tamanna's story to actually our next really fantastic group, TYCIA, who actually co-created a group called India Against Corona and Kasbai, very much on the forefront, working in a collaborative fashion across the country with so many frontline workers, trying to set up oxygen plants, getting oxygen to different people. जब सब लोग शायद घर के अंदर थे, वो लोग घर के बाहर थे.
And really, having had an opportunity to volunteer myself with the group, I can say that, you know, during this time, it was really amazing how TYCIA led this process. प्रकाश जी, आप TYCIA के तौर से अपनी कहानी शेयर करना चाहेंगे या? जी 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 प्रकाश जी, ओवर टू यू। शुक्रिया। आप मुझे सुन पा रहे हैं सही से? तो जो सेकंड वेव थी उसी की कुछ कहानियां हैं हमारे पास, उनमें से मैंने एक कहानी रखी है। और ये तब की बात है जब, जैसे आपने बताया कि सभी लोग घर के अंदर थे और कैसे हमारे यूथ टीम जो थी वो काम कर रहे थे। तो तब ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हुई थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, दवाइयाँ नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं, और जो एम्बुलेंस थी भी तो वो इतना पैसा मांग रहे थे कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर था, तो उसी पे कॉल आती थी हमें अलग अलग जगह से। प्रकाश जी, आपकी आवाज चली गई है। प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, थोड़ा माइक अपने पास ले लेंगे प्रकाश जी। बैटरी प्रकाश जी, आप कैमरा ऑफ करके बोल सकते हैं अगर आपको वो ज्यादा सही लग रहा है तो। एक बार पहले कैमरा ऑन करके। जी प्रकाश जी, आ रही है अभी मेरी आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है। तो उसी दौरान फिर क्योंकि एम्बुलेंस की बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हम सब साथियों ने मिलकर एक डिसीजन लिया था कि हम क्यों ना जो ऑटो चलते हैं उसका एक ऑटो एम्बुलेंस बनाएं और उससे लोगों की कुछ हेल्प कर पाए। तो उसी ऑटो एम्बुलेंस में हमने ऑक्सीजन का इंतजाम किया। और वो ऑटो एम्बुलेंस ये करता था कि कोरोना के साथ साथ जो दूसरी भी पेशेंट रहते थे बीमारियों के लिए, तो उनको हम लोग घर से रिसीव करते थे, कॉल करते थे वो हमारे पास, और फिर हम उनको हॉस्पिटल लाते थे, छोड़ते थे, ये चीज करते रहते थे। तो उसी दौरान हमारे पास एक कॉल आई थी, भगवती जी करके एक महिला है, तो उनको अपने कैंसर के इलाज के लिए डेली नोएडा जाना होता था, उनकी थेरेपी होती थी। तो वो क्योंकि उनके घर के हालात लॉकडाउन के कारण बिल्कुल दिक्कत में थे, तो उन्होंने हमें बताया कि जो उनका ऑटो वाला है वो अब नहीं आ रहा है और उसने ऑटो चलाना बंद कर दिया है। तो फिर हमारी ऑटो एम्बुलेंस उनके घर तक जाती थी और वो उनको रोज डेली लेके नोएडा जाते थे और थेरेपी करते थे उनकी ऑक्सीजन के लिए, कैंसर के लिए। तो जब उनसे हमारी बातचीत होती थी तो उनने उनसे पता चला कि उनकी 4 बेटियां हैं और घर में और भी दिक्कत है, तो उनके लिए फिर राशन और जो भी डेली की उनको जरूरत की चीजें थी वो हम लोग करते रहते थे। लेकिन इसी दौरान उनको कोविड हो गया और फिर उनको आइसोलेट होना पड़ा। अब दिक्कत ये हुई कि जब वो आइसोलेट हुई तो उनका जो कैंसर का इलाज था वो रुक गया और वो बहुत ज़्यादा फैल गया था, उनको गले का कैंसर था और वो बहुत रुक गया, और इस वजह से वो पॉजिटिव हो गई कोरोना के आने से। और बाद में पता चला कि वो इतना बढ़ गया कि अब उसका इलाज ही हुआ, और फिर अगस्त में, लास्ट अगस्त उनकी डेथ हो गई थी, वो इलाज ना मिलने के कारण। कोरोना उनका नेगेटिव आ गया था जब हमने थोड़े दिन पहले उनकी रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन वो इलाज नहीं मिलने पाने के कारण वो उनकी डेथ हो गई। तो टाइसिया ने ऐसी बहुत सारी और कहानियां हैं जहाँ जहाँ अलग अलग देश के राज्यों में काम किया। तो गांव देहातों में और भी हालात ऐसे थे कि वहाँ तो टैबलेट भी नहीं मिल पा रही थी, तो टाइसिया ने ग्रामीण इलाकों में भी काम किया, वहाँ घर घर डॉक्टर एक कैंपेन हमने चलाया था। तो उसके जरिए जो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहे थे तो हमने गाँव में ही फिर डॉक्टर, हॉस्पिटल और हेल्थ चेकअप का इंतजाम किया था, ताकि वो लोग
कि उनकी कुछ मदद हो सके। उसी तरह से हमने वैक्सीन के लिए और करके 2 प्रोग्राम अपने वैक्सीन एक्सप्रेस और इनामिना टीका करके कार्यक्रम चलाए थे, ताकि लोग जो गांव देहातों में शुरू में हो रहे थे कि वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं वो लगवा रहे थे, डर लग रहा था, तो वैक्सीन को लेके अवेयरनेस और वो लोग वैक्सीनेशन करवाएं, उसको लेके भी गांव में हमने कार्यक्रम किए। और फिर ये लग रहा था कि जो हम ये छोटी छोटी पहल ले रहे हैं, तो उसका आखिरी में लोगों को रोजगार एक चाहिए था कि भाई कैसे हम लोग दोबारा से अपनी जिंदगी को पटरी पे लाएं। तो उसके लिए हमने फिर प्रोजेक्ट सक्षम और प्रोजेक्ट समर्थ की शुरुआत की थी। उसके जरिए हमने गांव में लोगों के लिए कुछ आर्थिक मदद करके ताकि वो अपना रोजगार फिर से शुरू करें, वो हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसके तहत किया। और ये हम सब तभी कर पाए जो हमने शुरू में बात की कि कैसे हम मिलके कोई भी छोटी छोटी जो सामने तत्कालिक दिक्कतें आ रही थी उनको मिलके दूर कर सकते हैं। तो हमने तभी जो भी हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थे हमने उनसे बात की, उनसे मदद ली। हमारे पास एक यूथ पूरी टीम डेवलप हो गई जो हमारे वॉलेंटियर थे। तो ये हम तभी कर पाए जब हम उनके साथ हम लोग अच्छे से मिल के काम किए। और वो ये कि अभी थोड़ा वक्त कम है तो मैं अपनी बात यहीं रोकता हूँ, और आगे कभी मौका मिलता है तो फिर हम अपनी बात जारी रखेंगे। शुक्रिया नेहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। एंड बहुत ही पावरफुली आपने शेयर किया है कि कितनी स्केल पे और कितनी तेजी के साथ रातों रात आपने ये काम शुरू कर दिया था और आप लेके गए हैं, और जहाँ पे बहुत सारे हेल्थ इंडिकेटर्स कोविड को छोड़ के भी जो निकल गए थे उन लोगों को भी आप सपोर्ट पहुंचा सके थे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। तो इसके बाद we've talked about a lot across the country in this part. Sorry, प्रिया जी आप कुछ कहना चाह रही थी? Okay. So we will now go to actually मनीषा जी, जो नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है, जो बहुत सालों से ग्रास रूट पे नॉर्थ ईस्ट में औरतों के साथ बहुत गहरा काम करते आए हैं, और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे बहुत सारा उन्होंने काम किया है। वो वुमेन फार्मर्स के साथ, ट्रेडिशनल वीवर्स के साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो उनसे सुनते हैं थोड़ा सा। Sorry, Anurita, would you be sharing or Manisha would be sharing? Manisha ji, आप share कर रही हैं? Manisha will share. Yeah. Okay, fantastic. So Manisha ji, over to you to just to hear your story. Yeah, thank you very much to everyone. I'm most impressed with the speakers and how much they have done. For example, Prakash, you know, I did not even have the guts to go and look into plasma injections, this, that, because we are not doctors, and we had this terrible trauma that if we are going to get medicines without us being doctors or even being educated about it, what will be the consequences? So wherever our expertise was, we got delved into that. So the first thing I want to say about this COVID-19 is first about Northeast. Northeast consists of 8 states, and historically, since independence and before independence, it has been very alienated from what they call mainstream India. And one of our struggles was to see that Northeast Network showcases the work of women, because, you know, unlike Bihar and say Mainpuri district, I was there for about 4 months and I was shocked to see that all women are in parda. I used to read about it in sociology books, but they're all in parda. They can't see their husbands except at night, I suppose. They can't see their brother-in-laws, they can't do anything, but Northeast is different. And very few people knew about Northeast. So our first struggle was to see that we showcase the work of women, the most socially, most people, women who are very well, they have a mobility, they don't have a parda system, etc. When COVID came in, I mean, I'm now jumping from the work we did 27 years back into 2020, March 24th, when this
I don't know if I should call it fascinating, but this most imperious sort of a order came from the government that things should stop within 4 hours. And we realized that hundreds and thousands of young boys and girls from Delhi, Bombay, Bangalore, they're all people from Northeast, Ohomia boys, Naga boys and girls, Manipur, Sikkim, etc. They came in hordes into Assam. Somehow they made it in the train. Some people walked. I know of one gentleman, he came, a farmer. He was in Nagpur, but he came walking, and he kept walking. He took lifts in these trucks. Truck mein utke, he came up to Bhopal. From Bhopal, he came into Delhi. From Delhi into the Grand Trunk Road into Calcutta, and finally he made it to a small place called Roha. Roha is near Nagaon district. He made it, thin, emaciated, but he made it. So these are the kinds of heartrending stories we knew about. And whatever expertise we had to do something. So Anurita is there, I'm sure others are there. We got together and we talked about it. And we had our limits, of course. The first thing we did was to ask people, write to people on email for money, because we started deciding that we'll have to give dry ration, because that is something which will fill their stomachs. And if we are able to do that, at least there'll be some respite, because neither the government knew, or I knew, or you knew whether this coronavirus is going to go off or not. We didn't even know whether it was airborne or whether it's directly from the sputum, spit, nothing. We knew nothing about it. So with the money that we got, we absolutely fully mobilized ourselves. All the young members of Northeast Network, including a project that we have with Rita Banerjee, Green Hub, where we have at least 120 young people who have done their filmmaking courses. They know about environment. We started working like that. So the one thing, I shouldn't talk much because it's only 5 minutes. We in Assam, especially, we experienced a lot of domestic violence. Okay, because we have different segments of people. We have tea garden workers, we have farmers, we have people in the construction, we have people in the oil fields, etc. Now, they were not able to get out. The men who were working were stuck in their houses. And because of hunger, there were these fights. And I have already said it about, I think, Anurita, how many women? I remember 36 people had started phoning us up about the violence that they were suffering from. But what we did was to tell the chief secretary that you have to bring out an SOP of bringing in shelter for these abused women. We can't do anything. You guys better do something, because they're there was one woman running from the highway near Kaziranga, Gulaghat, running into the highway with her newborn baby because she was being violated. So these are the kinds of stories. So we got the chief secretary through a lot of struggle to make a mandatory SOP that all women who are being abused, all the frontline workers, social welfare department, everybody should be in attention. 108 helplines should come up to help these kind of women. So that was a success. I'll go to the next step, domestic violence. Yes. Manisha ji, sorry, I think we'll have to bring it to a close. I'm so sorry, because all right, sorry. The last there's a time limit. The last thing is about, because there was no food, etc. We have decided now that our next approach would be to see that we address the biodiversity of Northeast region and make ourselves food secure. That's all. Thank you. That's fantastic, Manisha ji. Thank you so much. And I know it's so difficult because of the amazing amounts of work that all of you have done. We really cannot do it justice. Actually, वो जो बोलते हैं ना, film का बस एक teaser है. What we are hoping is that people from here will also reach out
and learn more and get inspired and take that work to different parts of the country. Yeah. And I just want to say something to you, Neha. आज जो meeting हो रहा है, a lot of our field people have come. Assam से आया है, Nagaland से, from Meghalaya. The fact that this is an all India platform, I just hope they keep in touch with our field workers and we keep in touch with all of you. That's it. Thank you. Absolutely, Manisha ji. Thank you so much. Thank you so much. And इसी के साथ with the very powerful story of Northeast Network in trying to create a system and ensuring that it's inclusive, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में कोविड की वजह से जैसे औरतों के साथ जो रिटर्न माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके साथ जो हो रहा था उसको उसके साथ भी जूझना बहुत जरूरी था. So just seeing the different nuances of the work. And so we'll just move to Ashok. Ashok is from Center for Life Skills Learning. वो बहुत सारा काम capacity building पे युवाओं के साथ करते हैं. He's also he's won the Best Youth Icon Award from Lions Club International. He's a SARC Award nominee. So Ashok, over to you actually for your story. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. Are you audible? Audible? Hello, ma'am. Absolutely, Ashok. Yeah, Yes, yes. okay. Thank you very much. Thank you very much, because I can say proudly, I'm so happy because in front of us, in front of me, it's a great personalities are there. So I'm sharing some moments that the last 2 years experience. That's a great thing because in front of me is such great personalities. That's why the last 1 hour I'm hearing that the words. Okay, my name is Ashok from Kerala. It's working as a director of Center for Life Skills Learning. Okay, you have 4 minutes. Okay, it's a good message. Okay, I can say we are done is a big work. I think that's a big work, but we are mainly focused in the 7 areas. The one is the psychosocial care. The second one is the free medicine distribution. It's a mobile medical camp, free mobile medical camp, and grocery kit and vegetable kit distributions, TV and mobile phone challenges, and save farmers. That's the projects in that pandemic situation, COVID situations. Why the social? You know very well. Most of them are thinking it's a Kerala is the very well educated and well healthy states. It's a physical health is okay, but mental health is very. I think that it is very weak. So, in the COVID situations, so many youths are suicidal. You can search in Google. It's comparatively other states. So that's every day it's happens. It's not only in youths. It's most of them. It's 70 or 80% in youths. But another the suicide is also going on. So we suddenly decided that we discussed with some psychologists and some social workers and psychiatrists. So we created 26 members of group, and we started the through counseling through the phone. So with 3 months, it's gone. More than 2,000 people. We directly connected with more than 2,000 youths for the depression, decrease the depression and stress. What is the result means after that? Now the group is I think that some people are they are very much happy. Now it's also because that's some close connection with that people. That's the first thing. The second thing it's the vegetable kit distributions. Why the vegetable kit means? It's in Kerala in situations in the COVID situations. It's totally banned. It's totally closed. We purchased directly. We purchased 25 ton vegetables, different vegetables from more than 110 farmers. Indirectly, we collected more than 200 tons vegetables from the farmers. Why we collected from the farmers means in the COVID situations they produced so many vegetables, but they cannot sell. So we decided that we want to purchase the vegetables and to distribute free of cost in tribal area and also the COVID patients.
homes. The another is a thing is the experience is, if the Parambiculam is the tribal area, we want to move to the Tamil Nadu area, because it is a Kerala. It's a Parambiculam is a Kerala. It's a more than 600 families, tribal families are there. It's a forest officers call me. It's a, they have the last 1 month there is no much vegetables and grocery items. Can you provide that? It's department is ready, but we cannot move to in Parambiculam via in Tamil Nadu, because it's only one way is from Palakkad to Parambiculam via in Tamil Nadu. The Tamil Nadu government didn't allow to go to there. So at that time we discussed with the DFO. He permitted that to go through the forest. So our 30 volunteers ready to carry the food and grocery and vegetable items in more than 20 kilometers through the forest area. That means we started the 8 o'clock in the morning and 3 o'clock we reached at that place. The continuously 3 months is gone. The first and second pandemic situations. That's a great experience to us, because it's a more than 20 kilometers went to walk through the forest area and to distributed that the vegetable kits. The vegetable kits purchased from some more than 100 farmers. It's local farmers. They are poor farmers. Yeah, that's a great thing, because why I am choosing that the vegetables from that poor farmers means they are ready to hang, because they cannot sell in properly, not a properly, they cannot sell. The production is there, but they are thinking the situation is very pandemic situation at that time. Okay, anyway, it's a TV and mobile phone challenges are there. It's we mainly focusing the tribal area. Okay, I think that's a good message from the VartaLeap. Okay. Thank you very much. We have a little bit time now. Thanks. Thanks, Ashok. And I know that there are so many stories, and I think what you're bringing and highlighting is, one is how young people got involved along with the system and got permissions, and in hard to reach areas, connecting and finding local solutions, and doing cross connection in so many ways. So thank you so much, Ashok, for just the wonderful work that you've done. Thank you. So with that, we've had 4 amazing groups being represented, of course, बहुत सारे amazing speakers द्वारा, जिन्होंने थोड़ा सा अपने एक teaser दिया है कि क्या काम उन्होंने किया है. And this is not even, I mean, it's just the tip of the iceberg of really all the incredible work that they have done. शायद आज बैठ के आसान है पीछे देखना and बोल पाना उसके बारे में, but during that time, in उस माहौल में अपने आप को संभाल पाना and to be able to do this work for those around us, I think can we just have a round of applause and just अगर आप अपने emoticons use कर सकते हैं, can we just have some ways? Yeah, thank you, Lambinus. If people can just, and really the purpose behind this has been to really inspire us. What we hope is, like what Manisha ji also said, that this is a space, a platform to connect across the country. We hope that we are able to connect across and we are able to take away the inspiration from here and continue to do the work, because we're not out of the woods yet. And with that, the invitation is, because ye kaam, as we all remember and as we all know, COVID has set us back many years on the course of the development space that we have been working, जहाँ पे हम जो बहुत सालों का, decades का जो काम जो हमें आगे लेके आया है, वो कहीं COVID के दौरान बहुत पीछे चला गया है, and so we had to start rebuilding again. So this is just the starting, and let's remember that in this process, we need all of us to be taking that leadership and working with them. And kahin pe agar lag raha ho, we don't know where to start, then reach out to these wonderful people and find ways to volunteer and also engage. Yeah.
If anybody would like to say any last words before we go back to the main room where we're going to have some music and celebrate these amazing speakers and their stories. आप चैट में कह सकते हैं, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं अगर आप कुछ भी कहना चाहें. Yeah. Okay. It's been fascinating to listen. I don't. This is Naga here. Hi, Naga. It's been truly fascinating to listen to all these people, wonderful people talking, and it's quite inspiring to say the least. Look forward to hearing more from different people and from the same people, and hopefully sometime we'll get to meet the lovely people. Thank you for organizing. Thank you so much. Thank you so much, Naga, for sharing that. कोई और भी अगर बोलना चाहे, हमारे पास आखिर का 1 मिनट है. ये जो हौसला अफजाई करना और कहीं पे to be able to share back with people how much their sharing has inspired us, that is also one of the biggest sort of, it generates such a sense of well-being as well. So please do share, है ना? Please unmute करके या फिर chat में बताएं. Hello everyone, this is Buch here from Kashmir. So मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पहले नेहा का, थ्रू प्रवा इन्होंने हमें जोड़ा टाइसिया के साथ. बिकॉज अभी भी जब इंसान जब सोता है शाम को और याद आता है कि हमने कैसे कोविड में एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही कितने लोगों को मदद पहुंचाई, जैसे कि प्रकाश सर ने ऑलरेडी मेंशन किया, विद इन फिंगर टिप्स पे कैसे लोग वॉलंटियर जुड़े थे, ऑटो ड्राइवर्स रेडी होते थे. वो अभी भी जब सोचते हैं कि क्या हम व्हाट्सएप का सिर्फ इतना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे अल्टीमेटली एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है. अभी भी लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमने किसी को मदद पहुंचाई. और लिटरली जब हम उनसे बात करते थे एज वॉलंटियर्स, बहुत ही एक ऐसा सुकून मिलता था कि नहीं, कहीं ना कहीं अभी भी होप है, लोगों में अभी भी होप है कि समय फिर से सही होगा, और लकीली हुआ भी. सो थैंक यू सो मच. जो भी बाकियों ने यहाँ पे शेयर किया, सब की अपनी अपनी जगह एक इंस्पायरेशन स्टोरी है. और ऐसे जो हम जैसे यंगस्टर्स हैं, हमें भी लगता है कि नहीं, बियॉन्ड दीज डिग्रीज एंड ऑल दैट स्टफ, हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. थैंक यू. Thank you so much, Bhatnafia, for just sharing as well, and हमारे साथ ही शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. And thank you everyone. Like what Bhatnafia said, this is hope for us. This is how we keep hope alive. And ये जिंदा रखना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, और उसे जिंदा रखने के लिए वो मेहनत बहुत जरूरी है जो नगमा ने शुरुआत की थी हमारे पूरे दौर के उसके लिए, कि ये शायद सिर्फ बैठ के सपने देखने से नहीं होगा, सपने बुनने के लिए हमें वो उसके अंदर मैदान में उतरना भी पड़ेगा. So thank you everyone. Let us move to the main room.